Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine, and today we are here with another video. The main concern behind creating this video is I was recently using an iPhone to record the videos, and उस सिनेरियो कुछ इस तरह हो रहा है कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हो so you need a mic, right? I recently ordered this mic and I wanted to connect it with the iPhone, but iPhone 6s के बाद से iPhone 7 के अंदर there is no headphone jack. So what should we do about that? So I was worried and I just was going through on Flipkart and I have purchased two very useful gadgets which will be very useful for you also if you are using an iPhone from 7 to 14 I would say. ये दोनों जो है बहुत ही यूज़फुल होंगे आपके लिए, सो बने रहिए इस वीडियो के अंदर एंड लेट्स गो अहेड. So let's open them and check out how they are. Okay, so this is the first product. Let's keep this aside. Open another one. Yeah. So basically they both are from Portronics, and one is a cable to lightning jack from type A to a lightning jack, and the another one which is very useful for people who like to hear from wired headphones, a lightning to 3.5mm jack. वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे अवेलेबल है लाइटनिंग टू 3.5mm जैक एंड उनके रिव्यूज़ भी मैंने देखे, बट जहाँ तक बात है इस पर्टिकुलर ब्रांड की, Portronics, it's a well known brand, so we'll check out how the quality of both the product. Let's connect it with the phone and we'll check out. So सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं हमारे केबल को. तो मेरे पास फ़ोन के साथ में सिर्फ और सिर्फ ये एडेप्टर था एप्पल का 5 watt का, and let's open this cable. Speciality about this cable is that it supports up to 3 ampere, so somehow it will give you fast charging, but when it comes to iPhone there is no such thing as fast charging because iPhone कितना भी fast charge हो जाएगा as compared to Android. The people who are using 67 watt, oh that's great. This is a nice braided cable. I mean I must say it's a very thick and very good quality cable it is, and especially the thing is इसका जो point है lightning to lightning jack का, so that is in the angle of 90. So while you're charging your phone usually it will help I think, and nice. So it's you can just tie your whole cable with this organizer. I would say this is a very nice touch from Portronics. Thank you very much. And if we'll talk about the quality of the cable, I must say that it is very nice. Earlier I was using this cable to charge. I bought it from an offline store, but somehow by this cable the phone was getting heat a lot, so I thought I should get a better cable to charge it, or else the battery health will degrade very soon of the mobile. So let's connect it to the power source, and it goes here. Yeah, and इसकी भी जो finishing है it's matte rubber I would say. It's very tough, and यहाँ पर इसके जो टूटने के chances है बहुत ही कम है because it's a braided cable, so I hardly think so that it can break from here. Although the length of the wire is very much, it's more than 1 meter, so I would say that if you are plugging it on a higher level on the wall, you can still use your phone, but I would not recommend that while charging your phone. You should use it. When it comes to iPhone, I would say that you should let it charge peacefully. उसे अकेला छोड़ दो, उसे charge होने दो, okay? So let's connect it to the power source and let's see how it works. So मैंने power source में connect कर दिया adapter, and let's connect our phone with the charger. And this is how it says connected. It's showing connected.
The best part of this kind of angle, 90-degree angle, so if you're watching a video or if you're using the mobile, so you can definitely use it like this and you can play the videos. So I think that would be one of the best use of this 90-degree angle of it. And we'll keep the phone aside for some time, let it get charged. Right now अभी हमने जब इसको connect किया है at 6:53 and the charge is 58%, and we'll keep it inside and we'll unbox the other accessories. So we'll come to know that what is the speed of the charging and whether it is really fast charging or not. Okay, so we'll unbox the other stuff. Till then we just keep it aside. This Lightning to 3.5mm jack, 8 pin to 3.5mm aux connector. Okay, that's cool. Let's check out. So it's audio, power, smartwatches, laptop. Okay, that's cool. Thank you very much for so much information. And it comes with a 6 months brand warranty, I would say. ये brand warranty के साथ में है 6 months, so you should really go for it, because what happens is when you buy some other brand of Lightning to 3.5mm jack, usually after a week or two it does not work and then you get upset. So you should go for definitely for this. So इसका जो ओरिजिनल आप लेने जाओगे एप्पल का जब Lightning to 3.5mm, so it's more than 3,000 rupees. So I would say it's a done and done deal. And इसके बारे में आप क्वालिटी के बारे में तो मैं तभी बता पाऊँगा जब इसको हम खोल के यूज़ करेंगे. सो लेट्स जस्ट ओपन इट एंड चेक आउट. सो ये ओपन हो गया है हमारा बॉक्स यहाँ पर काफ़ी शिद्दतों के बाद. ओके, फाइनली इट ओपन. Nothing else in the box. No documentation. Oh, there is something. Cool. So it's like a sign and stamp. I believe it's for warranty purposes. You should just go and sign up on the website of theirs, and you can avail your warranty later on when you face any issues. So it comes like this, and this is the only thing which was inside that big box. Okay, I would say the quality of the cable, it is also braided cable, and here it is the aux for 3.5mm, and this is a lightning port. And the quality of this, I would say it is very strong, and ये flexible है लेकिन उतना नहीं है. I wouldn't say कि इतना flexible है. It's more usually in this state. So let's connect it to our phone and we'll I'll let you know that whether the audio is working with it or not. Okay, so इतने देर हमने इसको चार्ज पे रखा, and in meanwhile time it got charged till 63%. I would say not bad at all. 63%. मतलब ये जो वायर है definitely charging it in a good way. Let's disconnect the wire so we could test our So people who are using Lightning to 3.5mm jack for the first time, for them I would let them know that while you connect your extended cable to it, you have to turn on the Bluetooth, because the thing is it uses your Bluetooth you can see there's a device iKonnect3. Okay, so our device is now connected, and now you just plug your any 3.5mm headphone with it, and then you'll see. Okay, so it got connected, I would say, but it is very loose. I mean, the connection is very loose. As you can see, the Siri option is coming up from the top. As you can see, headset का symbol यहाँ पर बनकर आ रहा है, मतलब ये connect हो चुका है. And मैं सुनकर बताता हूँ कि actually में work कर भी रहा है या नहीं. I tried listening the music using the Lightning to 3.5mm jack, and the thing I would like to say is सबसे important बात,
ये जो 3.5mm जैक का ऑक्स है, इसके अंदर जब मैं मेरा 3.5mm फिट करता हूँ, सो एज यू कैन सी इट इज़ सो लूज़ के ये खींचने से ही निकल जाएगा। मतलब अगर ये बाहर पहन के आप जाते हो तो बाहर के लिए तो ये रिकमेंडेड ही नहीं है, क्योंकि बाहर आप जेब में इसको रख ही नहीं सकते। ये यहाँ पे इस तरीके से उसको फिक्स कुछ पकड़ ही नहीं रहा है। इट इज़ सो लूज सी, इट इज़ वेरी लूज। सो ओवरऑल व्हेन यू आर यूजिंग इट लाइक दिस, अगर आप इसको ऐसा रखते हो स्टेडी पोजीशन में एंड आप हिलते डुलते नहीं हो ज़्यादा और ये छूटता नहीं है, तो वॉइस क्वालिटी इस चुम्मा, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। कोई डिग्रेडेड वॉइस नहीं आ रही, कोई आवाज़ कम नहीं है, आवाज़ बराबर आ रही है। बट द एक्चुअल यूज़ ऑफ दिस वॉज टू use the wired headphone, and when it comes to that I really don't see it's doing the justice. And also one more thing, that while you connect your headphone with it, so it does not work with your inbuilt caller mic. It does not work that way. Also when I was trying to call Siri, it wasn't responding to me. In short कि जब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ तो माइक्रोफोन जो है वो काम नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आप गाने को सुन सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, गेम खेल सकते हो। एंड गेम खेलने के लिए भी आपको स्टेडी रखना पड़ेगा उसको कि वो बार बार डिस्कनेक्ट ना हो जाए। बिकॉज सबसे इरिटेटिंग चीज़ ये होती है कि जब वो डिस्कनेक्ट होने लगता है या वो थोड़ा सा लूज होने लगता है तो इट स्टार्ट्स मेकिंग स्टैटिक नॉइज एंड आपका सीरी अलर्ट हो जाता है फटाक से। ऑल्सो when you try to make calls using this, you cannot make calls, so you can only enjoy using listening music. इसका एक और मेन पर्पस जो मेरा मंगाने का था वो ये था कि क्या इससे मेरा ये जो माइक है क्या ये कनेक्ट होगा। तो लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इट एंड देखते हैं ऑडियो को कैप्चर करता है या नहीं करता है। ओके, सो अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया पर्टिकुलरली। पता नहीं कि ये वॉइस कैप्चर कर रहा है या नहीं। लेट मी चेक दिस। इफ़ यू आर एबल टू हियर दिस, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। यस, सो इट इज़ वेरी सेफ टू से कि इसने ऑडियो कैप्चर नहीं करा, बिकॉज दैट वॉज द ऑडियो वॉज गेटिंग कैप्चर्ड थ्रू द माइक्रोफोन ऑफ द मोबाइल। इससे वो कैप्चर नहीं हो रहा था। सो डेफिनेटली इसको मंगाने का कोई पर्पज़ नहीं हुआ। आई वुड नेवर रिकमेंड दिस इफ़ यू आर पर्टिकुलरली thinking to order this in order to speak on calls or to record your audio. It is not going to work that way. So for that you can definitely go for original one. If you have budget, you can definitely try thinking to buy the original one, and I believe original वाला जो होगा वो definitely सब कुछ support करता होगा, that I believe. But I think इसको सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक यूज़ के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए ही रख सकता है। एंड उसके लिए भी पूरे टाइम जो है इसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसका जो केबल है वो इसके साथ स्टेडी ऐसे ही रहे, बिकॉज ज़्यादा प्रेस करने पे भी सीरियल अलर्ट हो जा रहा है एंड लूज़ होने पे तो स्टैटिक नॉइस आ रहा है। सो आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हो और शेयर करते हो एंड सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो डेफिनेटली कुछ दिनों बाद शायद बजट बन जाए और हम रियल एसेसरीज़ भी ले लें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टू अनदर ब्रांड्स। आप लोगों के ऊपर है सारी चीज़ें। इफ़ यू गाइज विल कीप सपोर्टिंग दैट, आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ ऑफ दिस काइंडली। फाइनली I would say that you should definitely go for this Portronics to Konnect L cable. It's under 159 rupees. It's of 159 rupees and it's a super loving deal in this price range. And talking about this, it's a big thumbs down. 439 रुपीज़ का है ये प्रोडक्ट। एंड 439 के बाद भी अगर आपको इतनी मेहनत करनी है कि केबल को आपको खुद संभालना है, उसको प्रेस नहीं करना है ज़्यादा लॉन्ग, तो आई वुड से कि इट्स अ टर्न ऑफ डील फॉर मी। सो डेफिनेटली इसके लिए थम्स डाउन एंड इसके लिए इसके लिए थम्स अप। सो यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड you can go and check out more videos on my channel. Also please go ahead and check out the vlog which I recently posted, and I will see you in the next video. Thank you very much for watching this video. Have a good day. Take care. Bye bye. Jai Hind. Khuda Hafiz guys.